Hello. Hello, yes, good evening, sir. Good evening, Aliza. So, are you able to see Yes, this board right now in front of you? no, sir. The board is not visible. 1 second, sir. Yes, sir, I can see now. Huh? I can see now, sir. The board is clear to you right now? Yes, sir. Okay. So, shall we continue now? Yes, sir. Okay. Just wait. So, uh, today I have taken one question from the same topic, that is electrostatic potential, which we have been discussing in the Yes. previous session also. तो एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है. Now this question was asked in CBSE All India Pre-Medical Test. Before the NEET examination, this examination was known by the name of CBSE All India Pre-Medical Test. ठीक है? So this is a question which I have taken from the year. This question was asked in the year, I think, in the year 2008. This question was asked in the CBSE All India Pre-Medical Test in the year 2008. Yes, sir. So I have taken this question for this session, and if you have understood the basic concepts related to this topic, then it will be not very difficult for you to solve it. This is a very easy question, and based on a couple of formulas for the electrostatic potential and the electric field, you can get the answer. तो क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार आप ट्राई करिए. एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द CBSE ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट. ठीक है, इन द ईयर 2008. This question was asked in the CBSE All India Pre-Medical Test 2008, which is conducted in India. आपको पता होगा, Yes, sir. पता है ना, ये पता Yes, है. sir. Yes. अभी तो आप सऊदी में रह रहे हो, लेकिन वैसे तो आपको पता ही होगा. ठीक है, तो ये हाँ, ये क्वेश्चन मैंने वहां से लिया है. ट्राई करो करने की. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस एग्जामिनेशन, in physics or chemistry or in, you can say, this botany and the zoology, there are 4 sections. हर एक सेक्शन में 45 क्वेश्चंस आते हैं, and you are given approximately 1 minute to answer each question. ठीक है, Yes. एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट का टाइम मिलता है. Yes, sir. So this is the most important thing which you have to keep in your mind. इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम है. करिए, करके बताइए मेरे को. The electric potential at a point in free space due to a charge capital Q coulomb is Q into 10 to the power 11 volts. ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पे एक किसी पर्टिकुलर चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसकी मैग्नीट्यूड दी है आपको, which is equal to Q into 10 to the power 11. What in the question you have to find the electric field, the intensity of the electric field at this point. आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है. Yes, sir. आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे. और देयर आर 4 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन है. इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आप मुझे बताइए. Yes, sir. ठीक है, आई एम गिविंग यू ओनली 3 मिनट का टाइम आपको देता हूँ मैं. आफ्टर दैट इफ यू आर नॉट एबल टू डू, देन वी विल डू इट.
21 का आपने इसका आंसर निकाल लिया है क्या? Yes, sir. यू हैव फाउंड द आंसर? Yes, sir. आपने पूरा किया है ना इसका? Hmm. ओके तो आप एक काम करना, मेरे को व्हाट्सएप पे इसका सॉल्यूशन भेज देना. सो द करेक्ट आंसर इज ए. कैसे किया आपने? So पहले फॉर्मूला v is equal to q by 4 pi epsilon naught r. दैट इज इक्वल टू क्या? v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. Epsilon naught हाँ, r into q is equal to q upon 10 to the q upon r. yes sir. ठीक है, दिस इज द, Is ठीक है. हाँ, देन potential. हाँ ये, हाँ दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक This is पोटेंशियल. equal to q into 10 to the power 11. दिस इज इक्वल टू q इंटू 10 टू द पावर 11. ठीक है. 11. हाँ फिर q cancel. हाँ ठीक है. q विल गेट Then कैंसल्ड आउट. this is equal to 4 pi epsilon naught r is equal to 10 to the power minus 11. So from here what you have done? You have found the value of r. No sir, of Huh. 4 pi epsilon naught r. What should I write it here now? क्या क्या लिखना है मुझे? 4 pi epsilon naught r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. r हाँ is equal to 10 to the power minus 11. इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 11. ठीक है. ओके ये हो गया. देन Then electric field का formula 4 by हाँ. 4 pi epsilon naught r सो square. E इज इक्वल टू 1/4 पाई 4 pi epsilon naught इंटू q by r square. क्यू बाई आर स्क्वायर. ठीक है. अब क्या करें? Then 4 pi epsilon naught r is 10 to the power minus 11 square. But this is 4 pi epsilon naught r. But here it is r square. Yes, so 10 to the power minus 11 square. So what should I do here? Q by q by 10 to the power minus 11 whole square. q by 10 to the power minus 11 का whole square. Minus 11 whole square. Yes. No, how? See, this is, Q, yeah, listen, this is 4 pi epsilon naught r. Now Yes, sir. if you square it like this, then it becomes 10 to the power minus 11 into square, like this. 4 pi epsilon naught into r का whole square, this is equal to 10 to the power minus 11 का whole square. Here in this expression it is written 1/4 pi epsilon naught into q upon r square. yes, sir. Q into 4 pi epsilon naught by 10 to the power minus 11 whole square. आप एक काम करो, अपने व्हाट्सएप पे मेरे को सॉल्यूशन भेजो एक बार. Yes, sir. मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि आपने जो किया है कैसे किया है. आई जस्ट वांट टू सी इट नाउ.
ओके सो ओके hello. Hello, Okay, yes, okay. sir. So what you have done is you have multiplied this numerator and this denominator by 4 pi epsilon naught. Yes, sir. This is what you have done. Yes, sir. In the answer, what I have just seen, I have just seen in the answer that you have multiplied this numerator and the denominator by 4 pi epsilon naught, like this, है ना? Now this will become 4 pi epsilon naught whole square, Yes, sir. and this is where into r square, like this. Yes, sir. And so this can be written as because this is 4 pi epsilon naught whole square and this is r square, so this can be written as simply r square, है ना? Like this you have done it. हाँ. So this is the correct way. So इसका आंसर हो गया आपका 10 to the power minus 11 का whole square, Whole square. and so this will be equal to 4 pi epsilon naught q into ये हो जाएगा आपका 10 to the power minus 22, है ना? Yes, And sir. so this will be equal to 4 pi epsilon naught into q into 10 to the power 22. 22. ठीक है? So good. आपने बिल्कुल ठीक किया है. So this is the correct answer. ठीक है? So this question was asked in the CBSE All India Pre-Medical Test. ठीक है? Now we will take up another question. वो आपको मैं अभी बताता हूँ. 2 मिनट रुकिए.